कंटेंट का इशू होता है कि कंटेंट नहीं है, या फिर हमारा कंटेंट, हाउ टू डिस्टिंग्विश आवर कंटेंट फ्रॉम अदर्स सो एज टू गेन एन एज ओवर अदर्स। तो कंटेंट के लिए यू कैन रेफर एनी मटेरियल, कोई कोचिंग का मटेरियल, किसी टॉपर के नोट्स, जो कि पूरा सिलेबस आपका कवर करे जीएस का। लाइक जीएस 1 में हिस्ट्री का सिलेबस है, ज्योग्राफी का है, तो एक एक टर्म आपका कवर हो जाए, ऐसा कोई भी सोर्स पकड़ लो। तो जैसे मैंने शून्य आईएएस का रेफर किया था, तो उससे एक बेसिक कवरेज हो गया था मेरा। तो एक बार मेक श्योर करो कि सिलेबस कवर हो जाए। So once you have covered syllabus, और syllabus cover करते हुए you can also begin with answer writing. तो कंटेंट का जो एक बेसिक कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो with that you can begin with answer writing, ठीक है। फिर second issue that we come across is of time management. टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, मुझसे भी नहीं होता था। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, दैट इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस। You can practice 2 or more questions on a daily basis so as to be able to solve this issue of time management. Also, many toppers say कि time management के लिए you can use flow charts, diagrams और ये सब। तो I also did the same. जहाँ पे भी viable होता था, I used to use this. Like, or mostly if you have seen my copies, तो मैं फ्लो चार्ट्स का बहुत यूज करती हूँ, उससे टाइम सेव हो जाता है काफी। और डायग्राम्स वेयर एवर दे वर रेलेवेंट, आई यूज टू मेक देम, ड्रॉ देम, ठीक है। नेक्स्ट है इशू जो हम सब फेस करते हैं कि हम अपना 1 मार्क्स कैसे बढ़ाएं, 2 मार्क्स हम कैसे दूसरों से एज कैसे गेन करें। तो उसके लिए वही है जो enrich करना अपना content. How you can do that? You can make use of maps in geography, ancient medieval history, मतलब art and culture में, और economics में भी, in fact internal security में भी you can make use of diagram. जैसे for example, like in this question that I have posted an image. तो यहाँ पे in this question इंडिया का मैप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और ये IR का क्वेश्चन है, सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। तो यू कैन डू सच थिंग्स। बाकी ज्योग्राफी के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ वर्ल्ड मैप। Like I have done in this question. So diagrammatic representation से your answers would look a bit different from that of others. एक ये फायदा होगा, also it would address the demand of the question and save your time at the same time. तो काफी मल्टीपल पर्पसेस हैं डायग्राम को यूज करने के। तो ज्योग्राफी के अलावा भी यू कैन यूज इट इन अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी में कर सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में, जीएस 3 में डेटा का, फैक्ट का, इन सब का यूज कर सकते हैं हम। जैसे एमएसएमई का कितना कंट्रीब्यूशन है टू द एम्प्लॉयमेंट, टू द एक्सपोर्ट्स। तो ये बहुत ही बेसिक डेटा है विच वी शुड नो। और एमएसएमईज का जो प्रमोशन है वो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, वो गवर्नमेंट की वन ऑफ द कोर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का पार्ट है। सो वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट दी एमएसएमईज। तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, फैक्ट है, दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। लाइकवाइज GS2 में, पॉलिटी में आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स,
और schedules ये mention कर सकते हैं हम introduction में to gain an edge. और गवर्नेंस में वी कैन यूज कमिटीज की रिकमेंडेशंस, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी है, या फिर ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कैन बी यूज्ड. इट शुड बी यूज्ड इन फैक्ट. ठीक है, तो आई थिंक दीज आर द टूल्स with the use of which you can gain an edge over the answers of others. International relations में टर्म्स जो है जो कि डिप्लोमेटिक टर्म्स है या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म्स है. फॉर एग्जांपल अभी प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूएस एंड देयर इन हिज स्पीच he used that relations between India and US have shifted from hesitations of history to trusted geographies. So these kinds of statements would it would leave an impact on the examiner. It would make examiner understand that you understand the question and you have read IR. You can make use of such things. Apart from that, as far as ethics is concerned, ethics में definitions जो भी terms mentioned है syllabus में, you have to learn by heart all the definitions of the terms mentioned in the syllabus. For example, probity is mentioned or integrity mentioned है या फिर accountability is there. तो सबकी definitions करनी है. Also, ethics के answers में या फिर case studies में भी you can make use of such terms: accountability, integrity, compassion, empathy. Yes, तो ये आपको एक एज दिला सकता है. और बाकी और भी बहुत सारी चीजें, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू डू. Now, things that you have to keep in mind that should be in your subconsciousness always while writing answers or even before writing answers. We address the demand. You have to make an effort towards addressing the demand. You do not have to fill pages, ऐसे कि pages भरने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. Demand address होनी चाहिए. So for that, you need to understand the question well and then proceed with writing the answer. तो उसके बाद word limit का ध्यान रखना is also very important. I think this is it from my side. Now I will allow you guys to ask questions. So you can ask whatever queries that you have. Yeah, ma'am, so I basically had questions regarding ethics. The problem that I'm facing is that since it is too abstract to learn and understand, I'm not able to replicate it in words on paper while writing the answer. Okay, so so actually while I'm studying the various thinkers and the philosophies like Plato, how to insert them in other questions. Yes. Can you please come again? Yeah, okay. So my question was, while I am studying various thinkers like Plato, Socrates, and the philosophies that have been given by them, the questions are not directly asked around the same. They have to be inserted while writing the answers to other questions. So how to do that?
the use of thinkers or philosophers can be made while resolving ethical dilemmas that is asked in the question. Like in case studies, for example, you have to resolve an ethical dilemma or a conflict of interest. There you can make use of ethical philosophers. For example, Immanuel Kant's categorical imperative, which lays emphasis on use of means. So you can use it to solve some ethical dilemma which has been asked in the question. I think that will come naturally to you after a lot of practice. Okay, ma'am. Ma'am, my second question was, whenever any question asks what are the ethical issues involved in the situation, so the answer has to be addressed in terms of lack of values, the values that have been mentioned in the syllabus, or the perspectives which we deem as incorrect in the given situation, the ethical issues that have been asked. I think that depends upon the question. Sometimes we are able to come up with the values that are delineated in the syllabus. However, in some questions we are not able to write them directly. So it depends upon the questions, but you have to, strive towards writing those terms as far as possible in the answers. Thank you. Hello. Hello. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah, good evening, ma'am. Good evening. First of all, congratulations to you. Thank you. Ma'am, actually, my question is related to sociology. So, in paper 2, I face a lot of struggles. Actually, questions are really dynamic, so how to tackle that? I think to tackle dynamic questions also, you have to rely on the core understanding of the subject, whether it is that very understanding itself, I think. Use of current affairs will be at a few places, लेकिन जो डायनेमिक अंडरस्टैंडिंग है, डायनेमिक क्वेश्चन है, वो आपकी स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग से ही, अगर वो स्ट्रॉन्ग है स्टैटिक पार्ट, तो उससे वो डील हो जाता है बहुत बार. फॉर एग्जांपल कास्ट इन पॉलिटिक्स है, अगर उससे रिलेटेड कुछ डायनेमिक भी है तो वो स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग से ही सॉल्व हो जाएगा कि कैसे मिसयूज किया जाता है, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे हो रहा है, या फिर पॉलिटिसाइजेशन कैसे हो रहा है, या फिर रजनी कोठारी ने क्या बोला इस पे कि कास्ट इन पॉलिटिक्स का एडवांटेज क्या है. सो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग है तो वो हो जाएगा. डायनेमिक के पीछे ज्यादा मत भागो, फोकस ऑन द कोर अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर सब्जेक्ट, तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा. यू विल बी एबल टू एनालाइज क्वेश्चन उस पर्सपेक्टिव से. ओके मैम. सेकेंड वन इज पेपर 2 के लिए कौन से फॉलो करने चाहिए, नितिन सांगवान या अदर? मैंने नितिन सांगवान फॉलो की थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर उसके बाद आई रेफर टू स्लीपी क्लासेस एज वेल, ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए. बिकॉज हमें ऐसा लगता, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर 2 के लिए इट इज़ नॉट सफिशिएंट, तो मैंने स्लीपी क्लासेस की थी और लेवल अप की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, तो उससे जो भी सर फीडबैक देते थे उससे काफ़ी हेल्प हुई थी. तो या दैट्स व्हाट आई यूज्ड. मैम थैंक यू. ओके. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम एक्चुअली आई एम अ न्यू बिगिनर, मतलब मैंने अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स हो गए हैं. बट मैम माई क्वेरी इज अबाउट लाइक प्रीलिम्स के बारे में. जैसे कि हम लोग जैसे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये सारे होते हैं. तो अभी जैसे क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, तो व्हाट मतलब वो कैसा रहा है कि I think there is some network issue. I'm not able to hear you.
प्रीलिम्स मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो फिर वो चीज बैक वो चीज याद ही नहीं रही, मतलब कि कैसे फ्लो चल रहा था और क्या चीजें चल रही थी, मतलब देयर आर लॉट मेनी पेजेस और Yeah, I understand this issue. Since you are a beginner, so as a beginner, I also had this issue. I mean, everybody, I think, who is pursuing UPSC would be having this issue. Hello, am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are audible. I think he is not able to listen. yeah, ma'am. Actually, let me complete. वो कह रहा था कि अभी जैसे क्या हो रहा है ना कि मतलब पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद ये चीजें ऐसे हो रही। या मैम। हाँ, तो ये इशू जो है भूल जाने का, आई थिंक रिविजन इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. जैसे जैसे हम रिवाइज करेंगे, एक सब्जेक्ट को 3-4 बार पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में चीजें विल स्टार्ट गेटिंग रजिस्टर्ड. तो आई थिंक दैट इज द ओनली सोल्यूशन. देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट फॉर दिस. मैम actually I found. Yes, please. For essay, what I did, I can tell you that I read a lot of toppers' essays who scored high at that time. तो मैंने उनके essays बहुत रेफर किए, बहुत रीड किए. स्पेशली अनुदीप दुरीशेट्टी सर का जो ऐसे है, जो उनके नोट्स हैं, ऑल्सो जो उन्होंने सैम्पल ऐसे अपने ब्लॉग पे दिया हुआ है, तो आई रेड इट मल्टीपल टाइम्स जस्ट टू इंटरनलाइज द आर्ट दैट ही हैज यूज्ड टू राइट ऐसे. तो अनुदीप दुरीशेट्टी सर का ऐसे मैंने बहुत बार रीड किया. और एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न्ड ऐसे का, वो जो भी हम जीएस के लिए करते हैं वहीं से ही बिल्डअप होता रहता है. ऑल्सो जो भी हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं ऐसे की या फिर कोई भी, तो उससे जो भी मॉडल ऐसे वो देते हैं, उससे भी काफ़ी कंटेंट मिल जाता है. आई थिंक ऐसे में जो थिंग्स दैट यू शुड फोकस, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्लो ऑफ द ऐसे. फ्लो कैसे मेंटेन करना है, ब्रेकेज ना हो बिटवीन 2 पैराग्राफ्स और बिटवीन योर इंट्रोडक्शन एंड बॉडी. तो अब्रप्टनेस नहीं आनी चाहिए. फ्लो आई थिंक वो समझ आएगा व्हेन यू विल रीड टॉपर्स ऐसे. सेकेंड थिंग, सिंपल रखो, कीप इट सिंपल. लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल एंड लूसिड टू रीड. तो आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ एसेज स्ट्रैटेजी. मैम, एग्जाम हॉल में अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढंग से नहीं आते हैं, पूरा नहीं आता, तो उसमें हम लोग जो वर्ड लिमिट है उतना शायद लिख ना पाए, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? हाँ, दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स. इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे GS1 में जैसे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आए थे, GS3 में भी इनफैक्ट फैक्चुअल थे, GS2 में भी देयर वाज 1 or 2 क्वेश्चंस जिसके आंसर्स मुझे भी नहीं आते थे. तो जितना भी आपको रेलेवेंट उसमें पता है, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आपको ही नहीं आता होगा. वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वुड बी फेसिंग और वुड बी हैविंग इशू विद दैट क्वेश्चन. तो फॉर दैट जो भी रेलेवेंट आपको पता है उससे रिलेटेड, इतना कि आप उसका डिमांड बस एड्रेस हो जाए जितने भी माइन्यूस्क्यूल वर्ड्स में, तो उतना कर दो. इररेलेवेंट मत लिखो कुछ भी. तो उसमें वर्ड लिमिट अगर सेटिस्फाइड नहीं भी होती है, आई थिंक तो भी चल जाएगा, बिकॉज आई हैव डन दिस. जितना भी मुझे रेलेवेंट पता था उन क्वेश्चंस के रिलेटेड, तो आई रोट दैट ओनली. और मैम, अगर सोशियोलॉजी में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो मतलब मैंने नहीं पढ़ा कभी या थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का है, तो उसमें तो हम लोग कुछ अज्यूम करके नहीं लिख सकते, जैसे किसी थिंकर ने क्या बोला उस पे आ गया. राइट. इस बार ऐसा पेपर 2 में था, लीला दुबे पे देयर वाज अ क्वेश्चन. तो नोबडी हैड रेड दिस, एटलीस्ट जो मेरे एक्वेंटेंस है, उनको किसी को भी नहीं आता था वो क्वेश्चन. तो जितना भी अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. बिकॉज आई थिंक अगर आपको कुछ भी नहीं पता है उसके अराउंड, तो
एग्जामिनर अगर आप कुछ भी ऐसे ही लिख देते हो तो एग्जामिनर उसमें भी कोई मार्क्स नहीं देगा, एंड तो आई थिंक स्किपिंग इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज सब मोस्ट ऑफ द लोगों को वो नहीं आएगा वो क्वेश्चन. सो आई थिंक वी शुड नॉट वरी अबाउट सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. रादर जो हमें आता है उसको हम अच्छे से अटेम्प्ट कर दें, तो दैट शुड बी आवर गोल. Ma'am, one last question, ma'am. Based on your experience of mains, what do you think that for the best answers which you wrote and for the worst answer which you wrote, what may be the maximum and minimum marks which they may be giving? For example, when we give this test series, even when we write very good answer, they really give very low marks. So, Right. can you give some idea? आई थिंक यूपीएससी की मार्किंग जो स्कीम है, आई हैव नॉट बीन एबल टू एनालाइज इट अभी तक तो. और रही बात टेस्ट सीरीज में जो मार्किंग पैटर्न होता है, आई थिंक देयर इज अ स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द टू. सो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते जो भी हमें टेस्ट में मार्क्स मिलते हैं यूपीएससी के लिए, बिकॉज अभी अगर हम एसए की मार्किंग ट्रेंड देखें तो दोज हु वर टॉपिंग द एसए टेस्ट इन कोचिंग टेस्ट सीरीज, they got very low marks, less marks in UPSC. तो कोई convergence नहीं है यहाँ पे. तो we have to focus on addressing the demand, and जो भी हम value addition material जो भी मैंने जैसे बताया, maps का, data fact committee, judgments, ये सब हम डाल दें तो I think UPSC उसको reward करता है. अगर relevant है आपका, I just know this कि relevant होना चाहिए content. अगर आप ऐसे ही कुछ भी लिख दोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग पेजेस, तो दैट विल नॉट बी रिवॉर्डेड. तो मैम, जैसे आपका 151 आया है पेपर 1 में, जो काफ़ी हाई मार्क्स है, तो मतलब आपने जब एग्ज़ाम दिया तो आपका क्या पर्सपेक्टिव था कि इतना आपने सोचा था कि आ जाएगा, मतलब आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे? हाँ, आई थिंक पेपर 1 वेंट रियली वेल. पेपर 2 से भी अच्छा गया था. मतलब पेपर 2 में क्योंकि वो लीला दुबे वाला क्वेश्चन आ गया था तो इतना आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बट पेपर 1 वेंट रियली वेल. तो ऑल्सो मेरा मेन यस मैम, मतलब जैसे हम लोग देख के आते हैं तो कई बार ये फील होता है कि एक दो क्वेश्चंस बिगड़ गए और बाकी अच्छे गए हैं, तो उस बेसिस पे क्या आप कह सकते हैं कि अच्छा गया होगा पेपर, या अरे यार मतलब इस टाइप का सिचुएशन आपने फेस किया था क्या कि एक दो क्वेश्चन नहीं बने ढंग से, तो उसके कारण थोड़ा? आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी अराउंड दिस कि अच्छा नहीं गया या फिर अच्छा गया है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें अच्छा लगता है बट एग्जामिनर को वो चीज़ मे बी रेलिवेंट ना लगे. तो यहाँ पे बहुत सब्जेक्टिविटी है, हमारी उस पर डिपेंड नहीं करेगा वो. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं. दैट इज इट. You gave your best, that is what you did, right? या Okay, ma'am. Thank you. हेलो Hello, ma'am. Good evening. Can you hear me? यस गुड इवनिंग. Ma'am, the question is majorly about note making for like GS subjects, like especially GS and GS3. So I'm trying to refer like to like the basic books I refer to, like Lakshmikant and then like notes by Richty and other websites. For which Look, so for example, for GS3, for prelims or mains? for mains. For mains, are you appearing this time? Yes, ma'am. Okay. So the only like problem is that it's so scattered everywhere. Like nobody has good comprehensive comprehensive picture of a topic, and then like it takes a lot of time to like compile notes for like one heading or one like topic, because one has to refer to multiple sources. So is there a way to am I missing something, or is there a way to reduce that time in making notes? I think what I had mentioned earlier, that you can go through a particular source which you find good for basic understanding or for basic coverage of the entire syllabus. The note making, in my opinion, should be done of the
वैल्यू एडिशन वाला मटेरियल. जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू रेफर टू अ सोर्स फॉर कवरेज ऑफ द सिलेबस, बट नोट मेकिंग में सिर्फ जैसे कोई डेटा फैक्ट है या कमिटी है विच आई हैड टू ऐड इन फाइनल एग्जाम, वो मैं लिख लेती थी उस टॉपिक के नीचे. फॉर एग्जाम्पल जीएस गवर्नेंस में एनजीओज या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक है. सो हमें पता है कि उसके इश्यूज क्या है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज या जो भी, बट कौन से ऐसे एनजीओज हैं विच हैव बीन इंडल्जिंग इन दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, तो उनके नेम्स लिख लो, डेटा लिख लो. So that will reduce your time, and also I think it will help in last minute revision. Okay, well, yeah, that sounds good. Thank you, ma'am. Okay. Hello, ma'am. Hello. Hello.